जिंदगी की कहानी जब भी लिखी जाती है उसमें बीता हुआ वक्त किसी अहम किरदार से कम मायने नहीं रखता। वो इसलिए क्योंकि ये हमें ले जाता है जिंदगी की कुछ ऐसी हसीन गलियों के बीच जिन्हें हम छोड़ आते हैं। कभी ऑफिस, कभी फैमिली, कभी करियर, तो कभी कुछ और जिम्मेदारियों के हाईवे के लिए। हम कई बार रफ्तार से भागती इस वक्त की गाड़ी को रोक कर कुछ पल थमना चाहते हैं और वापस जाना चाहते हैं स्कूल की उन गलियों में जहां आज भी हम जोक्स सुना रहे हैं। इंटरवल खत्म होने के बाद भी वाटर कूलर के पास से जाने का मन नहीं हो रहा। टीचर के नहीं आने पर क्लास में शोर मचा रहे हैं। होमवर्क कॉपी घर पर भूलने पर क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़े हैं। भरी दोपहर में स्कूल के बाहर हरी चटनी के साथ समोसे के चटकारे ले रहे हैं, या फिर गेम्स पीरियड में मैथ या साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लगने पर मुंह फुलाए बैठे हैं। इन यादों की गलियों में एक धुंधला सा चेहरा और भी है जो खुद भी इस जिंदगी के हाईवे पर कहीं खो गया है, जिसके साथ हमने अपनी हर खुशी, अपना हर गम बांटा है। वो जिसके साथ हम सालों तक एक ही बेंच पर बैठे। हाँ, ये वही दोस्त है जिसके साथ मिलकर हमने नोट्स बनाए, जो हमारे बर्थडे पर जाता था क्लास में टॉफियां बांटने, जिसे पनिशमेंट मिलने पर हम हंस तो देते थे लेकिन बिना उसके बोर भी हो जाते थे। और वक्त की इसी करवट को हम कई बार रोकना चाहते हैं, पर यह समय सिर्फ आगे बढ़ना जानता है और पीछे छोड़ता चला जाता है वही कहानियां जिसे हम आज भी अपने मन के घरौंदों में हिफाजत से रखते हैं। Hello everyone, I am Reema Dhal, and for you all, Reema ma'am, my dear children, I started off being the class teacher of class 6 and then 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. I feel proud to call myself that I am a founder teacher of this school. I became what I am today because of this school, because of the management, our principal, teachers, colleagues, and mostly because of my children. In these 2 decades of my being a part of this institution, I would say there have been a lot of changes, but for me, what I feel what hasn't changed is my passion for teaching, my love for my children, but I'm unapologetically I'll say that my first batch of class 10th and my first batch of class 12, they still hold a very special place in my heart, and that will never change. I think I'm being biased and I don't apologize for that. I love them and I love them and I will love them forever. I am Atul Kumar Chaudhary. I have joined this institution 20 years before. Initial years, the school was up to class 10th, for which I made my contribution for sending the first batch. Today, almost 17 batches have passed out from this institution. As now I am going to be 50 years of age next year, so many of the faces are there in my memory but not their names. Definitely there are many individuals who are with me on the Facebook, on social media sites, but the number is very few. But yes, definitely we will come to know our worth, that we have taught these children, these students of our institutions are doing their best and contributing to the nation building today. I joined Central Academy in 1999 as a nursery teacher. I was the competition in charge and house in charge also. Children were given opportunity to participate, to speak, debates were there, jam sessions were there, various art, rangoli, craft activities were there. There was always something which Central Academy Indiranagar provided to students in the field of co-curricular activities, and the same is being continued still, because with the advent of technology the style has changed,
But more or less, here always the aim was to give something extra to the students, that edge which should make them different in this world. मैं रुपेश मिश्रा, सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 9। मैं ऑफिस में अकाउंट्स में सेक्शन में 99 से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों को मैंने एक्सकर्शन यहाँ स्टार्ट किया 2000 में। फर्स्ट बैच बच्चे हमारे गए मसूरी एंड देहरादून। इसके बाद फिर लोकल कुछ हमने अपने बच्चों को जू और ये बुद्धा पार्क और नेशनल पार्क हम लोग ले जा चुके हैं। उस समय बच्चों को अरेंज करना 100 बच्चे 120 बच्चे जाते थे। उस समय टीचर हमारे साथ आते थे, टीचर 10 टीचर होते थे, हर टीचर के पास 10 ABC करके ग्रुप हम लोग का होता था। प्रिंसिपल भी साथ में होती थी, साथ में स्पोर्ट टीचर होते थे और एक साथ गैदरिंग के साथ बच्चों को एक साथ होटल में खाना, एक साथ में रहना, सब बड़ा एंजॉय सब बच्चों ने किया। एक्स स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये रहा है कि आज भी बच्चे जब मिलते हैं मुझे लगता है कि हम अभी वहीं पे हैं और अच्छा लगता है। बच्चे जब हमारे कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो मुझे और अच्छा से वो लगता है, गट्स होता है कि मतलब बच्चे हमारे अच्छी जगह पहुँच गए और बहुत ही अच्छे बच्चे हमारे बच्चे हैं और सेंट्रल एकेडमी ऐसे ही हमारे बच्चों को आगे बढ़ाता रहे। I remember there were like odd 30-35 students in each section of A, B, C, of 12th and 10th, and I can say it with a lot of emphatically I can say that and proudly that none of them were disrespectful. I really mean it. They were so much full of regards, respect, and I want to add this today. That's missing. I don't know where we have missed out, but I think that we don't get children like them now. I think it's a great effort on your part, dear children. You made a good beginning despite the fact that we are going through a very tough time, the pandemic and all. And I think this is like a bright spot. I think you all need to do something for your alumni. This is your alma mater. This is your school. This is yours, children. Wherever in the world you all are, you belong here. A very good morning to all alumni members. I am Seema Tiwari. I joined Central Academy Senior Secondary School, Indranagar on 19th Feb 2019 after the superannuation of Ma'am Mala Saxena. She was here since inception, and knowing about this, that was the first reason why I joined. That a person who has been associated to the school for past 20 years, that means the school management and its students, they are definitely there to support, and that was the force which called me here. As from the day I have joined, I was just thinking of when to have the alumni meet, because this association, this part of a stakeholder plays an integral role in the grooming of the juniors. I have been a part of this alumni association for myself as a student, where I meet my teachers, me being a teacher and the students coming there, and now as a principal once the students come and they share their career and where they are. It's really so nice to share all these things, and that is why it's my humble appeal to all my alumni members, as and when you get time, come, join us, share your data, and we will be organizing one gala event where we want to have as many alumni as possible to be inside the school as an avenue where you can meet your teachers, you can meet your juniors, and you can meet me. तो आइए मिलकर हम वक्त की लगाम एक दिन के लिए थामते हैं और वापस से कुछ नई यादें अपने पुराने दोस्तों के साथ बनाते हैं। मिलते हैं सेंट्रल एकेडमी की एलुमनाई मीट 2021 में। तो पैक कर लीजिए बैग और सेट कर लीजिए टाइम टेबल, क्योंकि क्लास ऑफ 2004 जल्द शुरू होने वाली है।